Bismillahir-Rahmanir-Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind, and grateful. I'm Waqas Ahmad, and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. Today, we are going to read and we are going to discuss one of the lessons from our textbook. The name of that lesson is the importance of family. Dear students, as you know better, as I discussed with you people in the first lecture, as far as paper pattern is concerned, in paper you will have MCQs, you will have translation, you will have short questions. इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए सबक को डिस्कस करना ही होगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशल द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली इज़ to the civilization of free spirits. We might meditate on the odd fact that the first of the targets of tyrants and utopians of the political right and left is always the family. From Plato to Marx to Mao, all those thinkers who want society organized so that individual will fit into some overarching 5-year plan for the ideal republic. The ideal socialist or religious state inevitably trying to replace the family and place the education of the young in the hands of the state run institutions. Under the banner of freeing women for productive work or liberating the young from the prejudice of the old, or instilling the values necessary for an ideal commonwealth, parents and children are separated or allowed minimal contact. The motive behind this antipathy toward the family is not difficult to find. So long as men's and women's prime loyalty is to family and kin, they cannot be controlled by the state or any other institution. But if they can be convinced to switch their loyalty to some higher cause or institution, they will obey the dictates of their leaders. इस पहले पैराग्राफ में राइटर ने फैमिली की अहमियत को सराहा और कहते हैं कि ख़ानदान को मुट्ठी में रखना हमारे तहज़ीब का हिस्सा होना चाहिए। और जो पुराने ज़माने के थिंकर्स थे, फिलासफर्स थे, जिनके नेम्स यहाँ पर मेंशन की गई है, प्लेटो, मार्क्स एंड द अदर, वो सब चाहते थे कि एक इंसान को एक ऐसा प्लान दे दो, 5 साल प्लान, कि वो डिस्कस करे और वो प्लान उसके ख़ानदान को रिप्लेस करने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा सकता है कि जहाँ पर उसी प्लेन को वो जगह ले सकता है। और आगे ये भी आया है कि अंडर द बैनर ऑफ फ्री वोमेन फॉर प्रोडक्टिव वर्क, ख़ानदान को जिस तरह मुट्ठी में ले जाया सकता है, उसी तरह ही ख़ानदान की मजबूती और ख़ानदान की बुनियाद इस चीज़ पर ही बन सकती है। और इसका जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, वो क्या है? वो ये है कि फैमिली इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ख़ानदान तो आसानी से बन सकता है, उसकी राय ये है, लेकिन ये प्लान, ये मंसूबे मुश्किल से बनते हैं। लेकिन क्या है, जिस तरह ख़ानदान में औरतों और मर्दों की
लॉयल्टी और उसकी जो रिश्तेदारी वो किसी भी स्टेट या इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से कंट्रोल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर उन दो की जो लॉयल्टी और उन दोनों का जो ताल्लुक है मर्द और औरतों का किसी ख़ानदान में, उसको कंट्रोल करना तो उसे चाहिए कि वो लीडर को कॉपी करे। इस पैराग्राफ में राइटर ने ख़ानदान की अज़मत, ख़ानदान की अहमियत को सराहा और बयान किया। जिस तरह आपको मालूम है कि द टॉपिक ऑफ द लेसन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। याद रखो किस्सा, ये जो रीडिंग है ये ख़ानदान की अहमियत ही से इर्द गिर्द होकर it will come and it will be concluded on this very point. Next paragraph. For better or worse, the family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. Within the privacy of home, we may think, speak, and worship as we please. We may educate our children in the value we cherish and teach them respect for the tradition we uphold, because it is easiest to love our children unconditionally. The family is the natural school of love. Loving our kin, we may gradually learn to extend kindness to strangers, and because children incarnate our hopes, they are our vestal evidence of wisdom, of investing our time and care in the lives of others. इस पैराग्राफ में राइटर ने ये कहा है कि अच्छाई की सूरत में या बुराई की सूरत में जो भी सूरत हाल हो, ख़ानदान उसका दीवार या उसके मुकाबले में डटकर मुकाबला करने वाला ही एक एलिमेंट है। और ये किसके खिलाफ एलिमेंट है? जो इंसानियत को तबाह करने वाला हो या आपस में मोहब्बत और रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाला हो। क्योंकि अपने ही घर में इंसान आपस में बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, इबादत खाने की तरफ जा भी सकते हैं जो उसकी खुशी के ज़राए हों। हम शायद अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना ले, हम उसको सकाफत सिखा दे, हम उसको ये बता दें कि किस वक़्त किसके हाँ उठना बैठना है। क्योंकि बच्चों के साथ मोहब्बत ये मामूल से हटकर होती है, इसके लिए फैशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, हम दूसरों को जो प्यार और मोहब्बत देने वाला अंसर है वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होने वाला है। और ये बच्चे हमसे खुद बहुत सीखते हैं, क्योंकि ये हमारे इल्म और हमारे अंदर जो विज़डम है उसको कॉपी करके अपने ज़िंदगियों में ले आने की कोशिश होते हैं। नेक्स्ट पेज, and that is the start of the paragraph. Almost without noticing it, we are voluntarily eroding the freedom and surrendering the loyalties that no tyrant could take from us without a fight. But our increasingly slavish devotion to the economic order, we are destroying the cradle of freedom. The iron law of profit is best served by those who are willing to depersonalize themselves by valuing efficiency above compassion and devotion to the competitive goals of the corporation over loyalty to family.
इस पैराग्राफ में राइटर ने ख़ानदान के साथ जो लॉयल्टी है, ख़ानदान के लिए जो आज़ादी मिली है, उसके हवाले से बात की है। और राइटर ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि बग़ैर किसी सोच समझकर आज़ादी से हम जो लॉयल्टीज़ है हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्लियर? और वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बाय और इंक्रीजिंगली स्लेविश डिवोशन टू द इकोनॉमिक आर्डर, क्योंकि हमारा जो रुजू है वो इस पॉइंट पर है जिसमें हमारे माइशत का जो बढ़ना है वो है, और हम ऑटोमेटिकली मईशत की तरफ हम जा रहे हैं, मईशत को बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली थी उसको हम खुद ब खुद तबाह कर रहे हैं। और ये इसी तरह जो मुनाफे का सख्त लोहे वाला हाथ है उसकी वजह से हम अपने अंदर और अपने आपस की मोहब्बत को वीरान करने का हम सोच रहे हैं। और ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि उसकी वजह से इंसान खुद प्रेशर में लेकर आ सकता है और उसकी जो लॉयल्टी को ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादा मुनाफिक की तरफ रुजू होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स contain a parable that illuminates our present dilemma and offer a challenge to the men and women. Originally, economics meant the art of managing a household, and it contained the notion of theft and voluntary simplicity. Later, under the impact of industrial revolution, economics came to mean the system of production, distribution and consumption of commodities. When factory, store, office and bank disrupt the loyalties of men and replace the home is a center of economic activity, women who chose to give serious attention to homemaking were given the condescending title of home economists or economists, and the final transformation, which is to say degradation of the dignity of the home, is symbolized by recent change made at University of Iowa. What we once the College of Home Economics has now been renamed the College of Consumer Sciences. The students इस पैराग्राफ में इकोनॉमिक्स एक फील्ड है, इसकी तारीख के हवाले से कि वो पहले इस चीज़ को बता रहा था कि दैट इल्यूमिनेट जो पैदा करे, किसको पैदा करे, क्या उसका इब्तिदा का मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग हाउस होल्ड, घर की अशिया को बराबर करना। लेकिन ये बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से चेंज हुआ और उसका जो मतलब आया वो प्रोडक्शन और उसकी तकसीम और उसके इस्तेमाल की वजह से वो इस तरह आया। जब कारखाने, ऑफिस, बैंक और इंसानों की जो वफादारी वो रिप्लेस हो गई घरों की, जो घरों के अंदर औरतों और आदमियों की माबैन जो सीरियसनेस थी उसकी जगह पर तो औरतें ऑटोमेटिकली घरों में एक ऐसा माहौल पैदा करने वाली बन गई जो आखिरकार हम ये बता सकते हैं कि इसमें घरों का इज्जत ख़त्म होना है। और ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी जो ओवा है, इस यूनिवर्सिटी ने प्रेजेंट किया है कि what was once the College of Home Economics has been renamed the College of Consumer Sciences. इस कॉलेज को रिप्लेस किया इस टाइटल की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ, The only revolution that will heal us is one in which men and women
come together and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. A letter I got recently from a woman makes a point. Perhaps the real shift will come when men fully realize in the gut, not just in the head, and they are equally responsible with women for creation, nurturing and protection of children. इस पैराग्राफ में राइटर ने ये बयान किया है कि एक ऐसी इनकलाब की ज़रूरत है जिसमें मर्द और औरत इकट्ठे आकर और वो एक मजबूत खानदान को दोबारा उजागर करके और उसको जगा दे। राइटर ने कहा है कि मैंने एक बार खत वसूल किया जिसमें लिखा गया था कि एक ऐसी शिफ्ट तब्दीली की ज़रूरत है और आने वाली है जिसमें मर्दों की ज़रूर उसकी रियलाइजेशन होगी कि उसको चाहिए कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि वो बराबर वाले या बराबरी के साथ औरतों की तरह रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ में कि वो पैदा करे, वो खुराक दे दे और वो हिफाजत करे बच्चों की। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू मे ऑब्जेक्ट all of this is well enough in theory, but unfortunately, in fact, for many people, the family was vicious trip and a cruel destiny. The place that should have been a sanctuary was often torture house. The arms that should have held us often pushed us away. Many flee the family because it was the place of injury, captivity, disappointment and abuse. The children of alcoholics and abusive parents fear marriage and family and find their solace in becoming solitary. इस पैराग्राफ में राइटर ने यह लिखा है कि आप शायद मुझ पर इतराज करोगे, लेकिन तारीख और जो थ्योरी है इस पर ज़्यादा आई है, लेकिन बदकिस्मती से हकीकत ये है कि ख़ानदान बाज़ लोगों के लिए एक जाल की मानंद हो सकता है और एक जालिम जाल की तरह जो अक्सर ख़ानदान में लोगों को टार्चर करते हैं और ये इस तरह बाजू कि वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन बाज़ औक़ात मैनी फ्ली द फैमिली, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इनसे भागते हैं कि ये टेंशन की जगह है, ये वीरानी की जगह है, ये बदतमीजी की जगह है। क्यों? इंसान आज़ादी चाहता है और अक्सर जो ख़ानदान में बाज़ बच्चे शराब, अल्कोहल, गलत कामों के आदी होते हैं, वो तन्हाई मांगने की कोशा होते हैं कि इस ख़ानदान से तो बेहतर है कि मैं बाहर तन्हाई में रेगिस्तान के इलाके में मैं रह सकूं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस पेज के लास्ट 2 वर्ड से फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है। देयर आर so many bad marriages and dysfunctional families. It sometimes seems only reasonable to junk the institution or invent a replacement. True enough, but hopes of replacing the family with some more perfect institution like high-tech pipe, dreams of creating space colonies into which we can escape when we have polluted the earth, have proven to be both dangerous and deluded. It is within the bonds of what is familial that we must live or perish. इस पैराग्राफ के आधे हिस्से में ख़ानदान में अक्सर जो नफ़रत की वजह से, ख़ानदान में बड़ों की ज़ोर की वजह से वो शादियाँ वाक़या होती हैं और उसके नताइज अक्सर ख़राब ही होते हैं। इस ख़ानदान में जो लोग बाज़ औक़ात आते हैं तो फजूल किस्म का एनवायरनमेंट, माहौल क्रिएट होता है और ये इंतहाई काफ़ी है, ये इंतहाई, ये दिस इज़ एनफ
कि इसकी जगह पर लोग सोचते हैं कि क्यों हमने एक बड़ा कारोबार नहीं खोलना है। ये शादी पर जब हम खर्चे वगैरह कर दे ये तो फजूल है, वैसे भी मुझे ज़्यादा सुकून नहीं आएगा, और हमने इस ख़ानदान की वजह से क्यों लोगों को पैदा करे कि जिससे हम मोहब्बत बाद में नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर्चुनेटली द profusion of dysfunctional family does not necessarily predict a grim future for the family. One of the standard themes in mythology is the promise of the wounded healer. In our hurt lies the source of our healing. The bird with the broken and mended wings soar the highest, where you stumble and fall, where you find the treasure. इस पैराग्राफ में राइटर ने ये लिखा है कि खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये है कि हम अपने ख़ानदान को इस तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो आजकल हालात हो रहे हैं, और इसकी ख़ास मतलब ये है कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो बरसों से लोगों ने लिखे हैं, और इस कड़वी सच की वजह से हमें तकलीफ ज़रूर होता है, और इस तकलीफ की वजह से हमें राहत भी मिलती है। और ये राहत इस तरह है कि जिस तरह परिंदे के पर और परिंदे के पाँव दोनों ये टूटे हुए हो और वो हवा में इस तरह उड़ान कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, one of the man's greatest resources for change is our want and our longing for the missing father. We can heal ourselves by becoming the kind of fathers we wanted but did not have. Create out of the wood, out of the absence. Our best way for parenting is outlined like a photographic negative in the shadow side of our psyches. Get side of our physiques. Get in touch with your disappointment, your rage, your grief, your loneliness for the father, the intimate touching family you did not have. You will find a blueprint for parenting. Become the father you longed for. We heal ourselves by learning to give to our children what we did not receive. इस पैराग्राफ में राइटर ने ये फरमाया है कि इंसान का जो बड़ा ज़रिया होता है ज़ख़म का, या जिसको वो तकलीफ़ कहता है, वो उसकी वालिदैन की गैराज़री को वो कहता है। मतलब ये कि जिसका वालिद नहीं है वो इंतहाई परेशानी में ही होता है। राइटर ने ये लिखा है कि हमें चाहिए कि जो चीज़ें वालिदैन ने हमें मुहैया नहीं की हैं या वालिदैन की तरफ से हमें नहीं मिला है, हमें चाहिए कि वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करे। और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो आपके बस में ना हो रहा कहते कि नहीं मैं अपने बच्चों को ये दिला दूंगा। साथ में ये भी फरमाया है कि अपने बच्चों को इस तरह बनाना है जिस तरह आपके अब्बू ने या आपके बाप ने आपकी ज़िंदगी को इंतहाई अच्छे तरीके से गुजारने का मौका, गुजारने का कंडीशन क्रिएट किया। तो इस तरह पर क्या होता है that we must give to children what we did not receive. Last paragraph है, if you are not married, do not have children. Find a friend's child who needs nurturing and become a part-time substitute parent to be involved in creating a wholesome future. Men and women need an active, caring relationship to children. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young remains a boy, no matter what his achievements. This generation of men know by its longing for fathers who were absent that nothing fills the void that is created when men abandon their families, whether out of selfishness, dedication to work, or devotion to important causes. When anything becomes more important to society than the welfare of its children, it is sure sign of spiritual
डिसइंटीग्रेशन। इस आखिरी पैराग्राफ में राइटर ने यह कहा है कि अगर आप बच्चों की अहमियत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो और आपकी अभी शादी नहीं है, तो किसी ऐसे दोस्त के बच्चों को उसकी तालीम, उसकी खुराक, उसकी रिहाइश की जिम्मेदारी लो, देन यू विल बिकम अ हाफ पेरेंट। आधा जो वालिद का हिस्सा है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो चैलेंज के साथ कबूल करो। फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे की नशोनुमा के लिए, बच्चे की खुराक के लिए, तालीम के लिए किया किस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो आने वाले जनरेशन है वो वालिदैन को इस तरह मिस करते जाएंगे। क्यों? मैं अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ से इंसानों के माबैन जनरेशन गिफ्ट क्रिएट हो रहा है, और ये इस तरह हो रहा है कि सोसाइटी में बच्चों के लिए, लास्ट लाइन में दोबारा पढ़ता हूं, व्हेन एनीथिंग बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी देन द वेलफेयर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, इट इज श्योर साइन ऑफ स्पिरिचुअल डिसइंटीग्रेशन। अगर बच्चों से ज्यादा इंसानों को किसी और चीज की तरजीह हो या उसकी दिल में किसी और चीज की ख्वाहिश हो, तो याद रखो ये एक हकीकत है कि हमारे अंदर वो ज़मीर मरने वाला है, वो ज़मीर ख़त्म होने वाला है, वो बिगाड़ आने वाला है, वो जुदाई अभी आने वाली है जिससे हम डरते थे। मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इसको याद किया हो। जहां पर भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।